Welcome all of you in my YouTube channel, that is Infinity Pharma. So in this video lecture we will discuss about the most important questions for the upcoming railway pharmacist exam. Okay, so in this series we will cover about 2000 plus MCQs. Okay, so in this video we will cover the MCQ series from 51 to 75 from the subject industrial pharmacy and novel drug delivery system. So let's start the video and discuss all the questions one by one. So question number 51 is there. In that, particle size range of pharmaceutical suspension is. So what is the particle size range of pharmaceutical suspension? First option is 1 to 10 micrometer. Second option is 0.1 to 10 micrometer. Third option is 0.05 to 0.5 micrometer, and last option is 0.01 to 10 micrometer. Mainly the particle size range of suspension is 0.1 to 10 micrometer. Okay, so these are the size ranges of suspensions. Okay, suspensions, emulsions. Okay, so these size ranges are very important. So prepare all the size ranges for the suspensions, emulsions, then colloidal dispersions. Okay, colloidal dispersions, coarse dispersions. Prepare all the size ranges for these because it can definitely ask for the in MCQ format. Okay. Next, move forward to the question. Next question: what type of kinetic order do suspensions follow for chemical degradation? So, what is the kinetic order for suspensions to follow the chemical degradation? So mainly first option is first order kinetics. Second option second order kinetics. Third option zero order kinetic and pseudo first order kinetic. Mainly the suspensions follow zero order kinetics for the chemical degradation. That is zero order kinetic is the correct option for these. Mainly suspensions follow zero order kinetics for the chemical degradation. So mainly ये जो kinetics topic है kinetics ये बहुत important है kinetics and in this size ranges these are the important topic. Mainly focus on this topic for the MCQs. Kinetics इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, साइज रेंजेस इसमें से क्वेश्चन फिक्स रहेगा. So prepare these questions in very well and can be definitely used to upcoming pharmacist exam to solve the MCQs. Okay, then move forward to the next question. In that, a suspension is not suitable dosage for what type of injections? Okay, ये जो injections हम देते हैं that is इंट्रा आर्टिकुलर रहते हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबकुटेनियस. इसमें से कौन सा इंजेक्शन हम सस्पेंशन के लिए नहीं दे सकते, ऐसा हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है. इसमें जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस रहते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन जो कि हम डायरेक्टली टू द वेन्स उसको हम इंजेक्ट करते हैं ड्रग को, बट दिस सस्पेंशंस कैनॉट गिव टू द इंट्रावेनस because the size range of suspensions may be larger and can cause the defect in that case. So these suspensions cannot be given by the intravenous route. Okay, simple question is there. And logical suspensions cannot suitable dosage form for intravenous. So correct option is C, that is intravenous. So next question is the principal limiting factor in the rate of absorption from suspension is. Principal limiting factor for the rate of absorption. Mainly जब हम absorption का study करते हैं, absorption, okay, absorption हमारा किस पे डिपेंड रहेगा? absorption होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिसोल्यूशन इंपॉर्टेंट है. डिसोल्यूशन, ओके, जब डिसोल्यूशन आपका हायर रहेगा, जितना ज्यादा डिसोल्यूशन उतना एब्जॉर्प्शन आपका क्या होगा? हायर रहेगा. सो जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन रहेगा उतने ज्यादा मेटाबॉलिज्म रहेगा, और मेटाबॉलिज्म उतना ज्यादा रहेगा देन एक्सक्रीशन उसका उतना ही होगा. सो मेनली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिसोल्यूशन फैक्टर. जितना ज्यादा डिसोल्यूशन उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म. सो मेन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिसोल्यूशन रेट ऑफ द दैट ड्रग और सस्पेंशन. सो इन दैट जब हम इसके ऑप्शंस पूरे देखते हैं तो क्या है उसमें फर्स्ट वन डिसोल्यूशन रेट.
हमने अभी देख लिया डिसोल्यूशन इट माइट बी हेल्पफुल फॉर absorption. Second को आंसर हम देखते हैं, that is viscosity. It not depends upon the viscosity as that much. Then the suspending agent, also it is not correct. Then chemical stability, it can also be affectable, but mainly the dissolution rate, it is the most important factor for the principal limiting factor for the rate of absorption. Absorption का क्वेश्चन जब भी आएगा उसका रिलेट करने का किससे, डिसोल्यूशन से. जितना ज्यादा डिसोल्यूशन उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन, उतना ही ज्यादा मेटाबॉलिज्म, उतना ही ज्यादा एक्सक्रीशन. जब डिसोल्यूशन ही नहीं होगा एब्जॉर्प्शन कैसे होगा. ओके, सो मेनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज द डिसोल्यूशन rate. So this type of questions can be asked for the railway pharmacist exam. Then move forward to the next question. The flocculated suspension shows which type of flow. The flow behavior of liquid is most important. Flow behavior, that is first one is dilatant flow, plastic flow, pseudoplastic flow, and none of these. Mainly the flocculated suspension shows the plastic flow. Okay, this plastic flow can be shown by the flocculated suspension. The flow behavior is most important. Okay, in rheology it can be studied detail, rheology, physical pharmaceutics second. In that dilatant flow, plastic flow, pseudoplastic flow, and dilatant flow. These flows are very important from MCQ as well as for semester point of view. It can be definitely asked for 10 mark or 5 mark. It is the lengthy question and very IMP question. Very IMP question. So prepare all these dilatant flow, plastic flow, pseudoplastic flow, and their formulas. Okay, their formulas are very important formulas. So mainly flocculated suspension shows the plastic flow. Okay, shows plastic flow. Remember that plastic flow is shown by the flocculated suspensions. Then next move forward to the question number 56. In ideal suspension, particles should be ideal suspension के लिए particles should be non-dispersible, redispersed, forms a cake, and should be settled down. ये लॉजिकली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. मेनली क्या रहते हैं सस्पेंशंस. ओके, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नॉन डिस्पर्सिबल. ओके, ये भी हम उसको लॉजिकली इससे रिलेट नहीं कर सकते. नॉन डिस्पर्सिबल रहेगा तो आइडियल कैसे रहेगा, नहीं रहेगा. सेकंड है रीडिस्पर्स्ड, इसको हम नेक्स्ट फॉर्म्स अ केक. फॉर्म्स अ केक, जब इसमें केक फॉर्म होगा तो आइडियल कैसा रहेगा, नहीं रहेगा. ओके, शुड बी सेटल डाउन, जितना ज्यादा उसका सेटलिंग रेट होगा वो आइडियल नहीं रहेगा. देन फोकस ऑन सेकंड ऑप्शन रीडिस्पर्शन. रीडिस्पर्शन इसमें कुछ हमें करेक्ट आंसर नजर आ रहा है, रीडिस्पर्शन. सो आइडियल सस्पेंशंस पार्टिकल शुड बी रीडिस्पर्स्ड, पार्टिकल उसके रीडिस्पर्स रहने चाहिए. एक बार केक फॉर्म हो गया तो वो हमारे लिए आइडियल नहीं रहेगा. वो कैसे आइडियल रहेगा हमारे लिए, वो रीडिस्पर्सिबल रहना चाहिए उसमें. ओके, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, रीडिस्पर्स्ड. द पार्टिकल शुड बी रीडिस्पर्स्ड. ओके, नेक्स्ट MCQ number 57. In that the formulation of suspension by reducing the particle size, formulation of suspensions by reducing the particle size of dispersed phase make it thermodynamically. मेनली इसमें हमें क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. जो सस्पेंशंस रहते हैं हमारे थर्मोडायनेमिकली कैसे रहते हैं, सस्पेंशंस आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल. दे आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल. सो इसमें से सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा. द reducing particle size of dispersed phase make suspensions thermodynamically unstable. अदर ऑप्शंस कौन से, इनर्ट ए नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल. जो हमारा कंफ्यूजन रहेगा स्टेबल और अनस्टेबल में. ओके, और हमें मालूम है सस्पेंशंस आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल. सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा अनस्टेबल, अनस्टेबल. नेक्स्ट MCQ 58. To achieve thermodynamic stability, solid particles of suspensions may
फ्लॉकुलेटेड, डिफ्लॉकुलेटेड, डिटैच एंड नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस तो हमारा नहीं रहेगा, डिटैच ए भी नहीं, इसमें रहेगा अब दोनों में से एक, फ्लॉकुलेटेड और डिफ्लॉकुलेटेड। फॉर द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी the solid particle must be flocculated. Solid particles must be flocculated. Okay, it must be flocculated. So correct option हमारा कौन सा रहेगा? A, that is the solid particles of suspensions may be flocculated for to achieve the thermodynamic stability of that suspensions. Correct option है A, flocculated solid particles. Then move forward to the next MCQ 59. Higher zeta potential gives deflocculated type suspension and results in higher zeta potential. Zeta potential gives deflocculated type suspension and results in first option is sedimentation, second है transparent form, cake form, brittle form. So these are the options. In that mainly higher zeta potential gives the cake form of deflocculated type of suspension. जितना ज्यादा जीटा पोटेंशियल हायर रहेगा फॉर डिफॉकुलेटेड सस्पेंशन उतना ही उसमें केक फॉर्म होगा, उतना ही उसमें क्या होगा, केक फॉर्म हुआ एट द बॉटम. ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज केक फॉर्म. नेक्स्ट एमसीक्यू, ओस्टोल राइपनिंग कैन डिस्टेबलाइज. ओस्टोल राइपनिंग कैन डिस्टेबलाइज सस्पेंशन, इमल्शन, पाउडर एंड लिनीमेंट. ओस्टोल राइपनिंग ए रिलेटेड रहता है हमारे सस्पेंशंस के लिए. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सस्पेंशंस. ओस्टोल राइपनिंग is related for or can destabilize the suspensions. Okay, it can destabilize the suspensions. Note this, Ostwald ripening can destabilize the suspensions. Then move forward to the next MCQ, that is Stokes law. Mainly जब Stokes law हम स्टडी करते हैं, mainly related to the settling rate of suspensions. सेटलिंग रेट हमें इसमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? फर्स्ट, द रेट ऑफ सेटलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल डायमीटर. जहां सेटलिंग रहता है वहां स्टोक लॉ रहता है. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, द रेट ऑफ सेटलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल डायमीटर. सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल डायमीटर. थर्ड ऑप्शन है टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट. फोर्थ इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड फेज इज अनइम्पॉर्टेंट. So other options are not related to the Stokes law. Mainly Stokes law related है settling के बारे में, that is rate of settling. So first option is correct, the rate of settling is directly proportional to the particle diameter. Okay, next question is the value of sedimentation volume F gives a knowledge about dash 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 of suspensions. जो sedimentation volume है हमें किसके बारे में बताता है? for the suspensions. वो क्या कहता है हमारे लिए सस्पेंशन के लिए? उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी कहता है क्या, उसकी इनकॉम्पेटिबिलिटी कहता है, या सोल्युबिलिटी कहता है, क्या ऑल ऑफ दिस, ये सभी कहता है. मेनली हम जब सस्पेंशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो है उसके फिजिकल स्टेबिलिटी के बारे में उसको ज़्यादा हमें उसकी इंफॉर्मेशन देता है. दैट इज फिजिकल स्टेबिलिटी. इट डज नॉट गिव द इनकॉम्पेटिबिलिटी, इट डज नॉट गिव द solubility, does not give the all the above options. Okay, mainly it gives the information regarding the physical stability. Okay, first option is correct, that is physical stability. Next question 63, the non-ionic type of surfactant used in formulation of suspensions. जो हम surfactants study करते हैं, what is surfactant? Surfactant, okay, which reduce the surface tension, which reduce the surface tension. These are the surfactant जो हम used in the formulation of suspensions. First option है polyoxyl ethylene alkyl, second option is sodium lauryl sulfate, third option is n alkyl amino acids and last is soap. Mainly जो first polyoxyl ethylene alkyl जो हमारा रहेगा वो नॉन आयोनिक टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट है एंड इट कैन बी यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशंस. ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, नोट डाउन polyoxyl ethylene alkyl. Next 64, structured vehicle is included in the formulation of a suspension in order to structured vehicle are used in the formulation of suspension. तो structured vehicle क्यों हम
फॉर्मुलेशन में ऐड करते हैं फॉर प्रिवेंट द केक ऑफ फॉर्मेशन और डिक्रीज द इंटरफेशियल टेंशन और प्रिवेंट द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल। मेनली जो इंटरफेशियल टेंशंस उसमें जो रहता है फॉर्मुलेशन में वो डिक्रीज करने के लिए हम उसको स्ट्रक्चर्ड व्हीकल हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, और जो उसका इंटरफेशियल टेंशन जो रहता है वो क्या होता है डिक्रीज होता है। तो second option is correct, decrease the interfacial tension of that formulation. So second option is correct. Next MCQ number 65. Which suspending agent is hydrated silicate often used in pharmaceutical formulations? Which suspending agent is hydrated silicate often used in pharmaceutical formulations? First option is magnesium aluminum silicate, carbofol. Third is colloidal silicon dioxide, that is carboxyl, and last one is hydroxy ethyl cellulose. मेनली जो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो हमारा रहता है हम एज अ सस्पेंडिंग एजेंट उसको हम यूज करते हैं इन द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट. Next question number 66. The stability and shelf life of a suspension determined by. So first option is freeze thaw studies, sedimentation, particle size और particle shape. तो ये तीनों भी हमारे एक कैटेगरी में आते हैं, दैट इज सेडिमेंटेशन, पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल शेप. तो इसमें जो फ्रीज थॉ स्टडीज है हमको आइडिया देता है किस बारे में, फॉर द स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ ऑफ ए सस्पेंशन. फ्रीज थॉ स्टडीज. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट for the stability and shelf life of a suspension and it can be determined by the freeze thaw studies. हम सेडिमेंटेशन का यूज करके उसका हम पता नहीं कर सकते, पार्टिकल साइज उसका स्टडी करके हम स्टेबिलिटी थोड़ा फार हम उसको स्टडी कर सकते हैं लेकिन उसका शेल्फ लाइफ नहीं स्टडी कर सकते, और पार्टिकल शेप मेनली फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, दैट इज फ्रीज थॉ स्टडीज. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट MCQ 67. The following liquid vehicle is used for the preparation of emulsion, suspensions, colloid and all of these. Mainly the following liquid vehicle it mainly used for the emulsions. Mainly used for the emulsions, not these. First option is correct. The following liquid vehicle is used for the preparation of emulsions. Next MCQ is in a dispersed system, the order of particle size is. Order of particle size is first one solution, emulsion, suspension, then second one is solution, colloids, emulsions, then colloids, emulsions, suspensions and last one is emulsion, colloids and suspension. ये जो है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा. मीन्स जब हम colloids का स्टडी करते हैं, colloids so having the smaller size, colloids are smaller size, then emulsions having less size as compared to the suspensions. Okay, emulsions, then suspensions having the larger size, suspension having the larger size. तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा? थर्ड ऑप्शन, दैट इज colloids are smaller as compared to the emulsions and emulsions are smaller as compared to the suspension. So third option is correct. In a dispersed system, the order of particle size is colloids is less than emulsions, emulsions are less than suspensions. Okay, next move to the next MCQ number 69. Which type of the following is not an example of water in oil type of emulsion? वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन, इसमें हम डायरेक्टली भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, दैट इज मिल्क. इट इज नॉट द वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन. कॉल्ड लिवर ऑयल ए है, बटर ए भी सही है, कोल्ड क्रीम ए भी सही है, लेकिन नॉट अ मिल्क, नॉट अ मिल्क. ओके, then move forward to the next MCQ, that is MCQ number 70. So in that, complete separation of two phase of emulsion is known as. In that, first option is phase separation, second option is creaming, then third option is cracking and sedimentation. So these are the options, but in question what can I ask? Complete separation of two phase of emulsion, it is known as cracking. All of you know that the complete separation of two phase of emulsion, it is known as
cracking. That is, two phases are completely separated and they are visible, and that separation is known as cracking. Okay. Also, the phase inversion or phase separation is there, creaming is there, sedimentation is there. Also, question can be asked from this point also. So prepare this emulsion topic as like the suspensions. Okay, and it can be definitely helpful for the upcoming pharmacist exam. So next, move forward to the next MCQ. In that, 71 is there for preparing the emulsion using volatile oil. The ratio of oil and water and gum is. तो इस क्वेश्चन में हमें जो रेशो जो है volatile oils and in the emulsion, in that first option is 4:2:1, second option is 2:2:1, third option is 3:2:1, and last is 1:2:1. So what is the ratio of oil, water and gum in preparation of emulsion using volatile oils? So is this ratio is second option, that is the ratio is 2:2:1 for oil, water and gum. Okay. Remember that the ratio of oil, water and gum for the preparation of emulsion using volatile oil is 2:2:1. So next, MCQ number 72. The anionic emulsifying agent used for the water in oil type of emulsions. So anionic and cationic emulsifying agents mainly are used in the preparation of emulsion. So हमें इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो कौन सा है? Anionic emulsifying agents. Okay, for the water in oil type of emulsions. Water in oil type. So emulsion के भी दो types होते हैं. कौन से? Two types. In that, water in oil, oil in water. Okay, water in oil in water, और water oil in water in oil. So ये जो different types है, किसके types है? ये जो emulsions के type है. So हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में कौन सा? Anionic emulsifying agent for the water in oil emulsions. In that, first option is sodium lauryl sulfate, sodium stearate, calcium oleate, and last one is cetrimide. So correct option is C, that is calcium oleate is the anionic emulsifying agent. Anionic emulsifying agent. Mainly the classification of emulsifying agent is important for that and their examples. Mainly आपको इसमें क्या स्टडी करना होगा, जो एग्जाम्पल्स रहेंगे एनियोनिक के और कैटायोनिक emulsifying एजेंट कौन से हैं. जब आप इसके एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करते हैं तभी आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो पाएंगे, नहीं तो ये आपका कंफ्यूजन में रहेगा कौन सा एनियोनिक है कौन सा कैटायोनिक है. सो प्रिपेयर इन दैट वे. आपको क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है? एनियोनिक और कैटायोनिक. ये जो टाइप है क्वेश्चन का, आप उस पर ध्यान दीजिए. आप क्वेश्चन मत सिर्फ रिमेम्बर करते रहेंगे तो आपका लिमिटेड स्टडी उसमें हो जाएगा. आप क्वेश्चन का टाइप समझिए, उस वे से आप जो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं उसका आप स्टडी कीजिए. सो इन दैट वे द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज कैल्शियम ओलिएट. ओके, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द question number 73. The vanishing cream is an example of which type of cosmetic emulsion? Okay, तो vanishing cream हम prepare करते हैं in pharmaceutics is the example of which type of cosmetic emulsions? ये कौन सा type है? In that, first option oil in water, then second option water in oil type, then micro emulsion type, and last one is biophase type. So mainly all of you note that vanishing cream. Okay, vanishing cream are the example of oil in water type of emulsion. Okay, oil in water type of emulsion. Remember that vanishing cream are the example of oil in water type of emulsion. Next, move forward to the question number 74. Which compound is used to stabilize soap type emulsion in combination with fatty alcohols? In that, first option is sodium lauryl sulfate, second option is cetyl trimethyl ammonium chloride, next question third option twin 80, and last one is pan 60. मेन क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच कंपाउंड इज यूज टू स्टेबलाइज सोप टाइप ऑफ इमल्शन. मीन स्टेबलाइजेशन पे क्वेश्चन है, स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शन. ओके, इसका भी आपको स्टडी करना हो. स्टेबलाइजेशन
for the combination of fatty alcohols, mainly जो सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड जो होते हैं, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड वो यूज किए जाते हैं किसमें, फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ सोप टाइप emulsion in combination of fatty alcohols. Okay, so second option is correct, that is cetyl trimethyl ammonium chloride. Then move forward to the last MCQ in that series, that is question number 75. Which type of flow behavior, which type of flow behavior is typically associated with a phase volume ratio of 50% of emulsion? Phase volume ratio of 50% of emulsion. In that, first option is Newtonian flow, second option is pseudoplastic flow, third option is plastic flow, and Bingham bodies or Bingham plastic flow. Mainly जो pseudoplastic flows होते हैं, pseudoplastic flow are typically associated with the phase volume ratio of 50% of emulsions. Mainly स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो फ्लोज है आपके इन रियोलॉजीज, जो रियोलॉजी टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें से जो न्यूटोनियन फ्लो, प्लास्टिक फ्लो, pseudoplastic flow and Bingham bodies, okay, then elastic deformation are the important topics, and one or two question must from this topic. And their next जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने स्टडी किया था, दैट इज साइज रेंजेस. साइज रेंजेस इन दैट कौन से साइज रेंज आपको स्टडी करने हैं, इमल्शंस, ओके, इमल्शन, सस्पेंशंस, then colloidal dispersion, coarse dispersion, okay. So these are the important topic. In that, one or two questions are fixed from this topic, so prepare in that way. So this is the last one, is the answer key for this series. So check all the answers and prepare in that way. First of all, understand the depth of the questions and which topic is important for the upcoming railway pharmacist exam. So this is our MCQ series of the MCQ 51 to 75. So in next video we will discuss about MCQ up to the 100, from 76 to 100. So please like, share and subscribe my channel for upcoming more videos on the pharmacy related content and other topics. Thank you.